Imagine if I close your eyes and keep something to eat in front of you and ask you, what is it? If you compare the eyes with any other organ in the body, you realize that man is nothing without eyes. It is through these eyes that we see the world. They enhance our experience of the world. Even our brain needs the eyes to work to its full potential. Just ask anyone who has to live his life without them. दोनों आंखों में मोतिया है, इस आंख में मोतिया ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ऑपरेशन कराना हो तो मैं दाखिल कर दूं? दो में करेंगे? नहीं, एक आंख में करेंगे, सीधी आंख का ऑपरेशन करेंगे। हाँ, कराना ऑपरेशन? हाँ, कराना। पैसे मेरे को नहीं है ना अमन है, यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी इलाज है, उसकी कोई फीस नहीं है। अच्छा, सारा फ्री है। क्या नाम है अम्मा आपका? गुलाम फातिमा। हाँ, गुलाम फातिमा। गुलाम फातिमा। क्या उम्र है अम्मा? उम्र तो पाकिस्तान तो बाद पाकिस्तान बढ़ी है, 7 महीने बाद मेरा जम है, पता नहीं 60 साल है क्या 65 साल है क्या कितने। वार्ड में ले जाओ अम्मा को दाखिल कर दीजिए। तो प्रेशर कम से रगड़े हो। सनागली जो बुखारी चौक संगोई ना था। हाँ, रियाला संगोई संगोई रागली। हमारे यहाँ People in Pakistan can't afford the expense of cataract surgery. Those who are poor, where do they go? वो कहाँ जाए? Some are rickshaw drivers, teachers, students, clerks, while some are housewives. कोई क्लर्कशिप कर रहा है, कहीं कोई हाउसवाइफ है। There are some who don't even have a roof over their heads. कोशिश यही होती है कि We try to provide them with as many services as we can. What do you feel when you see so much poverty? I feel sad, but then people say this is God's will, and we can't do anything about it. Yes, what we should do is help as many people as we can, like a candle that spreads light. Someday, someone will rise to the challenge. But why wait? Why can't we make the first move? If the patients can't come to us, we should take our services to them. कितो माजी? धोनी? नाम बताएं? वो तो दवाई देंगे इंशाल्लाह। मैं दुआ कर सलामत अल्लाह तो तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह साडा भी सुधार करे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जेड़ा शख्स मेरे राह दे उत्ते 1 रुपया खर्च करता है, मैं उसनूं 10 रुपए दियां। वज़ल्ललना लहुम फ़मिनहा रकूबुहुम व मिनहा यकूलून वला हुम फ़ीहा। अल्लाह ताला जो भी है माड़ा चंगा रिज़्क चला रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जिनके 10-10 आदमी घर दे कमाण वाले उन्हां दा भी नहीं गुजारा हुंदा। ते साडा एक बेटा है जिहड़ा दर्जियां दा काम करदा, टेलर दा काम करदा, वो भी किसी दे कोल करदा, तो उहदी के उजरत मिलदी 120 रुपया।
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਨਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਆਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਗਈ ਤੇ ਜਾਨ ਗਿਆ, ਦੰਦ ਗਏ ਤੇ ਸਵਾਦ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਬੀਨਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣਵਾਉਣ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਖਿਦਮਤ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। We don't make any compromise in our surgery. We bring in the best surgeons. People believe that camps offer low quality treatment, but this is not the case. We strive to make the quality better. Not the quantity, make the quality better. In 2011, Noor Dubai conducted a camp in Africa, in a village called Ferafini. There we registered a 32-year-old woman who had 2 children. She had mature cataract in both eyes. She said that she hadn't seen both her children for the past 2.5 years. One was an infant who she was breastfeeding. The other was with her. We registered her and operated on one eye on the same day. The next day we took off her bandages. That moment is etched in my memory till today. The way she was crying, I thought perhaps she cannot see properly. Her tears moved me a lot. So I asked one of the volunteers to ask her why she was crying. The volunteer said she could see and that her tears were of joy. She told them that she had been breastfeeding her baby for over 2 years, but had never seen what he looked like. When I think of that, I can't stop praising God, because nothing in the world can compare to the love of a mother. If one person has heart surgery while another who is unable to see properly has eye surgery, then the joy of the person who recovers and can see is much more than that of the heart patient. The heart patient will be conscious about every step he takes, everything he eats, every time he coughs. But the one who gets his sight back will want to see the world. The heart patient will think, I will get up only when I have to. But the one who had eye surgery will think, I can't wait to see every corner of my home. He'll want to see the people around him, his wife, his children and grandchildren. There is a saying, health is a crown that the healthy wear, but only the sick can see that crown.
आपका मुआयना हो चुका है, आपका मुआयना हो चुका है, ठीक है। आज इंशाल्लाह आपका ऑपरेशन हो जाएगा शाम के टाइम पे, क्योंकि आपका नंबर जो है वो है 157, ठीक है। ठीक है, आप उस साइड पे बैठ जाइए, आपका 2 दफ़ा मुआयना हो चुका है। इंशाल्लाह आप बैठे वहाँ पे। I remember when I decided to go to medical college, I promised myself that I would become an ophthalmologist. If I wasn't an eye surgeon, I don't think I would be in the medical profession at all. My entire reason of becoming a doctor was to become an ophthalmologist and serve people. My name is Dr. Wasimullah Memon. बॉडी है